वालेकुम। दी राइजिंग स्टार्स की एक नई एपिसोड के साथ आग अब्दुल सत्तार हाजिर खिदमत है। आज हम बात करेंगे महाजिर और सिंधियों के ताल्लुकात की, और हमारे साथ प्रोफेसर एमेराइटस आगा खान यूनिवर्सिटी डॉक्टर HR अहमद मौजूद हैं, जो NGV स्कूल में खुद पढ़े हैं। मामा पारसी के करीब इनकी रिहाइश थी। DJ साइंस कॉलेज में पढ़े हैं, SM कॉलेज में पढ़े हैं, और फिर जर्मनी से उन्होंने PhD किया है। तो HR साहब, शुरू करते हैं। ये तस्वुर किया जाता है कि माजी के कुछ अदवार में सिंधी और महाजरों के दरमियान ताल्लुकात कशीदा रहे हैं। आपकी क्या यादें हैं जब आप NGV स्कूल में थे? हम तो कहेंगे कि महाजिर और सिंधी की बहुत गहरी दोस्ती थी। और जब हम अ, इंडिया से यानी पटना बिहार से और से बॉम्बे आए, और बॉम्बे से जहाज़ से अ, कराची केमाड़ी आए, तो हमें सिंधी फैमिलियों ने वेलकम किया है। और बहुत ही आई मीन यू कैन नॉट इमेजिन, इट वाज लाइक कमिंग होम, एंड दे took great care of all the Mahajirs. And so much so that पीर अलाई बख्श साहब ने अपनी अ, अपनी जो वो विलेज थी, और जो वहाँ उनकी हार्वेस्टिंग थी, उसका एक हिस्सा उन्होंने महाजरों को दिया, और PIB कॉलोनी बन गई। एंड वो बहुत और जितने भी JV स्कूल भी एक सिंधी स्कूल था, जिसमें सारे टीचर होते थे और हर किस्म के स्टूडेंट होते थे। तो महाजिर और सिंधी जो है वो बहुत ही करीबी थे। दे टुक ग्रेट केयर ऑफ अस as if we were refugees, and you could imagine we were highly impressed. Even one of my cousin was adopted by a Sindhi family, वो जीजी माँ हम लोग कहते थे। So I mean it was a very, or in the beginning in JV school we used to learn Sindhi also, and Sindhi was discontinued in 1958 as Sindhi and history both. And then, the whole atmosphere, but yet the atmosphere was pretty well. यानी हम लोग के नहीं आपस में काफ़ी अच्छी दोस्ती थी, एक दूसरे का जाना आना जाना था, और ख्याल था, कोई डिफरेंसेस नहीं थे। और ये सारे डिफरेंसेस मेरे ख्याल से ये बाद में पैदा हुए। एंड अब ये है कि पाकिस्तान बनने से यानी एक पाकिस्तान के हिस्से में लोग रहते थे, सिंध और पंजाब, ये वहाँ यानी आप वो इंडिया गए, और इंडिया से वो मुसलमान लोग, एक एक्सचेंज प्रोग्राम चल रहा था। एंड बट yet it was hard, but we were welcomed. The differences came afterward. And आपका NGV स्कूल का क्या माहौल था उस वक्त? कितने स्टूडेंट होते थे? कितने टीचर्स होते थे उसमें? क्या एथनिक कॉम्पोजिशन थी? महाजिर कितने थे? सिंधी कितने टीचर्स थे? उसमें सारे मिक्स टीचर थे, यानी हम सिंधी भी थे, पंजाबी भी थे, और पठान भी थे, ज्यूज भी थे, क्रिश्चियन भी थे, हिंदू भी थे। हमारा जो हेडमास्टर था वो पारसी था। सो इट वाज ए वेरी सेकुलर इन्वायरमेंट in JV school, and also the students were all very mixed था, उसमें कोई वो नहीं था। So we had, so the sectarian and religious differences were not there. हम्म। तो फिर ये दूरियां कब शुरू हुई सिंधी और महाजिरों में? ये भुट्टो साहब के दौर में हुई या पहले, उससे पहले हो गया था? हाँ, मतलब है कि जो महाजिर जब बाद में आए, तो उन्होंने सिंध को वैसे फतह नहीं किया कि तमाम वो स्कूल खोलते और इंटीग्रेशन करते और सिंधी ज़बान सीखते। तो कुछ हम लोग की तरफ से भी महाजिर भी थोड़ा सा लेड बैक थे, बट ऑल दिस थिंग आफ्टर 60, राइट? एंड
So 47 till 60 things were different, and 60 to 70 things were bubbling but yet tolerable. But 71 के बाद, when we got the first watershed due to loss of East Pakistan, then we were lost like in the Valley of Moses. Then we had multiple problems, and तो वहाँ पर वो एक्टिविटी, और फिर एक और भी बहुत इंटरेस्टिंग वाकया हुआ कि उस ज़माने में students used to come from abroad, from Middle East and the Far East to study. The traders used to come, and the visitors used to come, and the textile industry was going very well. And the only this is my opinion, had they changed, had they not changed the capital Karachi to Islamabad, economically Pakistan would have been better. आपने And कहा कि 58 तक जो है वो सिंधी पढ़ाई जाती थी, तो उस टाइम में क्या अच्छे खासे महाजिर स्टूडेंट्स को सिंधी लिखना, पढ़ना या बोलना आती थी? I used to speak Sindhi. I used to speak also partly Punjabi. That was any so, and we were living in Wilson Street, and so the whole street was like a drawing room, and we were living in flat, and so it was a very collegial atmosphere, because everybody was going through hardship and survival, and so this was a tough time, being a refugee in the beginning, that you are settled in India and then you are uprooted. I mean, this whole drama was really one of the kind in the history of. And more sad thing was that 6 months before our independence, there was a Punjab was bleeding and Bengal was bleeding, and I think we were celebrating our independence afterward. So sometimes I do not understand this behavior, that how we forget everything. क्या ये तासुर सही है कि महाजिरों की जो अशराफिया थी, उनमें एक स्ट्रेंज सेंस ऑफ सुपीरियॉरिटी था, और ये वन ऑफ द रीजंस है कि हम सिंध में एसिमिलेट नहीं हो सके, सिंधी कल्चर के साथ हमने कुर्बतें नहीं बढ़ाई? इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती है, एंड एक तो सबसे पहले स्ट्रगल था फॉर सर्वाइवल, एंड और उसमें यानी but I think if they would have tried to integrate into the Sindh, that would have been much better. And but in the beginning, this process was there, that Mahajir and Sindhi were very good friends. There was no differences. Even the Sindhis were great help for us. They used to go to Kemadi to pick pick Mahajir, and they were like a buddy, like a buddy system. I have all very positive uh, thought and relationship with. But later on, I left Pakistan, Karachi in 1962, and in my absence, what happened, I have not observed, but I think 71 was the watershed. नो, बट टू व्हाट एक्सटेंट ये अ, बात सही है कि जो महाजिर अशराफिया थी, या महाजिर जो ब्यूरोक्रेसी थी, या महाजिर अशराफिया के सर्टेन हिस्से जो थे, उनमें एक अजीब सा स्ट्रेंज सेंस ऑफ सुपीरियॉरिटी था? I mean, most of the civil servants were Mahajir, and they came from India because they chose for Pakistan. And but yet they might have been, but they were kind. They did not make much differences. But I think the institutions where the Mahajir were active, they should have been more towards going towards integration and taking care of other people also. So there तो were some differences were there.
تو اگر آپ اس وقت کی فیڈرل بیوروکریسی میں کراچی میں جب جاتے تھے، جو فیڈرل گورنمنٹ کا آفس ہوتا تھا، تو اگر وہاں پہ 100 افسران ہوتے تھے تو آپ کو کتنے وہاں پہ مہاجر اور کتنے سندھی نظر آتے تھے؟ کیونکہ سندھیوں کا اور بہت سی دوسری قومیتوں کا بھی یہ شکوہ ہے کہ مہاجر ور اوور ریپرزینٹڈ، اچھی خاصی ان کی تعداد ہوتی تھی. This is they were army was from Punjab and bureaucracy was from India, Indian civil servants. This is true. So this was the cake divided by the British Empire. We have not chosen ourselves, and so this is and yeah. I think the Mahajir brought more religion, and the Sindh were more secular before 47, and because they had a very uh, um, solid middle class, and that middle class has been replaced, so there is a vacuum, and you don't fill it so easily. But it was a really, you have to have the discerning intellect to see order in chaos. تو آپ کے خیال میں یہ تاثر صحیح ہے کہ مہاجر جو ہے وہ سوشلی کنسرویٹو تھے اور بڑی ریلیجس سوچ بھی رکھتے تھے، لیکن مہاجروں میں پروگریسو فورسز بھی تھی، لائک فتح یاب علی خان اور سجاد ظہیر صاحب، امام علی نازش اور دوسرے لوگ. Forces were not working. They were more. I mean, if they were the liberal forces, they should work on it. School and teaching and learning together. That part was not there. So it was more theoretical left, but not in practical left. Right? آپ This کے is خیال میں اگر مہاجر سندھی سیکھتے اس سے کچھ فرق پڑتا؟ oh yes, great integration hoti, shadi hoti, and so I mean, and I think the main thing was the middle class was missing in Sindh. So Sindh had a upper class and the lower class, and the class is now a Mahajir. So that was they could not become a cambium ring to integrate. So I think the integration was a problem. So that dynamic uh, middle class, this was there, but it was foreign, and and that will take a long time to be the part of. So we came to. I mean, if the people went to Germany, or then they have to learn language. If you go to France, you have to learn language. So in the same way, we came to Sindh, we should have learned language. Language is right, and but I think overall, if one has to study this more in detail, and maybe my knowledge is just the initial till 60 and 62, right? So 62 ke baad I was absent. Then I تو came back 62 کے بعد آپ پاکستان کب واپس آئے؟ 85. 85. تو آپ نے So we had already first watershed was in 71, and the second watershed was 79 when we became frontline state. تھینک یو ویری مچ ایچ آر صاحب، آپ سے مزید بات ہوتی رہے گی انشاءاللہ مختلف موضوعات پر. آج ہم نے مختصر سی بات کی جس میں زیادہ تر ایچ آر صاحب کی یادداشتیں تھیں. یہ کوئی ایکسپرٹ اوپینین نہیں تھا، لیکن ایز اے سٹیزن انہوں نے جو کچھ دیکھا. ایچ آر صاحب اب ماشاء اللہ 80 سے اوپر ہو گئے ہیں، تو ان کو لازم بات ہے وہ 50s کا اور 60s کا ٹائم یاد ہے، 47 کے بعد کا کچھ ٹائم یاد ہے. تو ہم نے سوچا کہ ان سے اس حوالے سے بات کی جائے. کے اوپر اچھی سی اسٹڈی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ.